Hi students of class 1. Today we will discuss English grammar subject, chapter name pronouns. In the previous classes we had also discussed what is pronoun, example of pronouns. Today we will continue the rest part of this exercise. Okay? At first, follow. Rewrite each of the following sentence, replacing the underlined words by pronoun. What is the meaning? There is a sentence and underline a word. Manoj is a good boy. Underline Manoj. Manoj is a naming words. इसका मतलब है मनोज is a noun. Manoj. Replace the word Manoj and put a pronoun. Okay. Manoj is a good boy. Manoj is a male person. So replace Manoj and put he. All of you know that male person we used he and female person we used she. So here we use he. Manoj is a good boy. Then answer next line we write he is a good boy. Understand? Very good. Next, Sonia gave me a trophy. Sonia underline. Sonia is a naming words, also noun. Sonia is a female person. So replace Sonia we use she. Okay. What is the answer? She gave me a trophy. Do this at the same procedure. More than one person they use हो सकता है. ठीक है ना? Non-living thing we use it. Okay. Next topic. Solve the riddles with the help of this clause and find the name of the fruits. Also circle the pronouns. Read this line. I am red, I am sweet and juicy, I am and dash. Left side some sentence and follow. The right side is a picture. At first read this line and tell me what is the answer. What is this fruit's name? Okay. I am red. मैं लाल हूँ. I am sweet and juicy. मैं मीठा और रसादार बा रसालो हूँ. I am a dash. You put the fruit's name here. Okay. This picture is an apple. मतलब shape. I am an answer. What is the answer? I am an shape. Apple. Yeah. Answer क्या होगा? I am an apple. Apple मतलब shape. Okay. All of you understand? How do you do in this homework? Next, read the sentence statements, then write the answer. Raju want to cycle. Raju want to cycle. What does Raju want? राजू साइकिल मांग रहा है, मतलब उसको साइकिल चाहिए. What does Raju want? क्वेश्चन क्या है? राजू क्या मांग रहा है? What you do? क्वेश्चन क्या है? रीड द स्टेटमेंट. इसको अच्छे तरीके से पढ़ो. देन राइट द आंसर. उसका आंसर लिखो यूजिंग प्रोनाउन. प्रोनाउन से उसका आंसर लिखना है. What does Raju? Raju is a naming word, means noun. The answer. What is the answer? She or he or she, but they, we, all these are pronoun. इसी तरीके से प्रोनाउन से यूज करके प्रोनाउन से सहायता से तुमको ये सब आंसर लिखना पड़ेगा. ओके. तो लेट्स गो. आंसर क्या होगा? व्हाट डज राजू वांट? राजू ही. राजू क्या मांग रहा है?
what does he want? what does राजू want, मतलब राजू क्या मांग रहा है, उसके चेंज होकर क्या होगा, उसको राइट द आंसर, ठीक है. देन राइट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ही वांट ये साइकिल, ही वांट ए साइकिल. समझ में आया ना? वेरी गुड. नेक्स्ट, सीमा इज गोइंग टू स्लीप. व्हाट इज सीमा डूइंग? स्लीप मतलब सो जाना. व्हाट इज डूइंग टू स्लीप? व्हाट इज सीमा इज डूइंग टू स्लीप? व्हाट इज सीमा डूइंग? सीमा क्या कर रहा है? सीमा इज स्लीपिंग. तारे सीमा मतलब मेल पर्सन, तो शी. ओके, इस तरह तुमको क्या करना है, सीमा इज डूइंग टू स्लीप. आंसर क्या होगा? तुम क्वेश्चन क्या मांग रहे हैं, व्हाट इज सीमा डूइंग, तो व्हाट इज शी डूइंग? शी इज स्लीपिंग, बस शी इज स्लीप. आंसर होगा शी इज स्लीप. ओके, अंडरस्टैंड? ओके, वेरी गुड. डू दिस exercise and after the complete exercise send me to WhatsApp. Okay, all of you, bye.